Hello students, how are you? Hope you're doing well. Now the question is, figure shows a rectangular conductor PSRQ in which movable arm PQ has a resistance small r and the resistance of PSRQ is negligible. The magnitude of EMF induced when PQ is moved with a velocity v does not depend on option A magnetic field, option B velocity, option C resistance and option D length of PQ. So the problem is based on the topic electromagnetic induction. Now the basic concept is this, that the EMF is induced when there is a change in either the magnetic field or the area or the total area which is covered by this particular rod and this frame combination. So in this particular case, E equals to minus d phi by dt, and we know that phi is B into A and B is a constant here, the field is constant here, so minus d by dt, and we can pull B out of this differentiation and only the area remains in the differentiation. So this comes out to be minus B d by dt of the area. Now the area changes from L into X. It is a rectangular frame. This is a rectangular area. So earlier the area is L into X, L into X. Now when this particular rod moves here in this direction, suppose it moves a distance of dx in a time interval of dt, then the area changes to L into x minus dx in dt time interval. So we can say that the area, the change in area is given by minus, this is given by minus b, change in area is given by L into dx by dt. Now this L is fixed, there is no change in L, only this x changes. So dx by dt is the change in the this particular length. So dx by dt is nothing but the velocity. So we can put here dx by dt as velocity. So minus blv. So the EMF is minus b into L into v, where b is the magnetic field, L is the length, this particular length, and v is the velocity. So we can say that it does not depend on the resistance, because in this expression there is no term corresponding to the resistance of this rod. So we can say that option C is correct here, that the EMF does not depend upon the resistance. So this is the final answer. So let me explain the problem in Hindi also. So इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर फ्रेम है, उस फ्रेम पे एक पर्टिकुलर रॉड मूव कर रही है जिसकी रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये पर्टिकुलर रॉड मूव करती है एक वेलोसिटी v से। हमें बताना है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ ऑफ पी क्यू और रेजिस्टेंस और वेलोसिटी, इनमें से किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो कंसेप्ट है वो लगाया। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है हमारा माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई होता है हमारा बी इंटू ए, फाई की जगह हम पुट कर देंगे बी इंटू ए। बी यहाँ पे कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो उसको हम डी बाई डी टी से पुल आउट कर सकते हैं। ए इज द एरिया, एरिया में भी लेंथ दिस एल, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, केवल इस एक्स में चेंज आ रहा है। सो हम कहेंगे एल मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स, एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो एल इंटू डी एक्स बाई डी टी। सो बी इंटू एल इंटू डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या है हमारा वेलोसिटी, इस रॉड की वेलोसिटी है। तो हमने यहाँ पे रॉड की वेलोसिटी के लिए वी टर्म लिख दिया, और हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो है ईएमएफ का आया पी एल वी। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बी इंटू एल इंटू वी, जो कि कहीं भी रेजिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं है। सो हम कह सकते हैं दैट द ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस। सो दिस इज द answer of this particular problem. Hope you understand the solution. Thank you.